with a lot of information. Everything you would like to know about mooting, especially. But other than that, if we have fresher students here, I would be happy to answer any questions you have related to law school. If you don't already know about us, the Legal Chronicle specializes in giving legal tips to fresher students. So I want some energy from your end. I want some videos. I want to see some of your faces and not talk to a black screen with Ashish on it. So that would be See, really, I really already helpful. know few of the students who are our old students. I can already see few names like Yes. Himani, Nayan. I know you guys. Oh, we Obviously, have I've seen Himani and certificates Nayan of here. legal. Yes. Yes. So, Okay. guys, just and we'll ask Vikrant. Vikrant, just let us know when we can start, like Yes, formally, sir, or you do can you want start us to start? now. Acha, Okay, okay. so let me begin with Okay. the Yeah, introduction. yeah, yeah. Please Good go. evening, Thank you so much, everyone. Rajin. My name is Jlsr. I'm the moderator of today's session. First of all, I thank you all for registering in webinar series on debating and mooting by Jlsr General. The speakers for today's session are Ashish Agarwal, founder and partner at Legal Chronicle, and Aakriti Vikas, co-founder and partner at Legal Chronicle. Ashish and Agarwal graduated from School of Law, Christ University this year and are supposed to be practicing in Delhi. Ashish and Akriti have won competitions like NSIU, PIL Moot Court Competition, Amity International Moot Court Competition, Al Amin National Moot Court Competition, and many more. They were always passionate about practical aspects of law like research papers, mooting, etc., and wanted to teach these things to students who find it difficult for themselves. So, during pandemic, they started an organization named the Legal Chronicle, where they assist students learn these practical concepts. So, the topics which would be covered in today's session by our speakers are how to draft perfect memorial, how to research for the memorial, how to go about oral rounds and answer questions of judges, and how to decide the best moot court for you. Participants are requested to kindly drop their queries in the chat box itself, which will be answered by the speakers in the end of the session. Now, I request the speakers to be please begin with the session. Over to you, speaker number one. Thank you, Shajil. Thank you for your kind introduction. Feeling that I'm someone who doesn't like to ask questions, I'm not sure, I'm not confident, maybe it's a stupid question. Let me put it out there to you, there are no stupid questions. It's better that you ask me any question, be it small, big, according to you. And trust me, I would be happy to give all the answers, because it's better that you get all the answers from me than you get it later in law school when the time has passed, when it's too late, right? I have got some text saying, can you please use Hindi and English for better understanding of all students? So, Tulika, I am fluent with Hindi as well, but I would also like a yes from all the students, at least 15 of them, so that I can proceed with Hindi so that everyone is able to understand. Is everyone fluent with Hindi? Like, if you use Hindi and English both, is everyone okay? Anyone who If we doesn't get understand? around 10, Yeah. 15 yeses, then we can share a little bit of Hindi as well. But I'm not Anyone fluent from in Hindi. southern part of India who is not comfortable in Hindi, please be comfortable. Please speak that you are not able Yeah. to understand. If It's you are from completely South fine. India and you don't understand Hindi, we understand that. We completely agree with you. So if you are someone like that, you can put it in the chat box, and we'll try to keep it a mix of both so that everyone understands. And I think we can use English and Hindi both, not a problem. Okay. How many yeses do we have? Okay, quite a lot. ठीक है, now it's going to be a little tough to actually switch, but okay, while I speak, I'll do that. Right, so like you can see on the slide, we are mentors. Now, Ashish, can we move on to the next part? Yeah.
we have put in here 3 names and we've put in where they've published their research papers. So I'll tell you a little bit of my experience so that you maybe would relate to it, but it will be a good takeaway for you as well. Okay. These are, firstly, we have not put this here to show you ki acha, we have testimonials or anything like that, which is very common in the industry. I'm sure you've seen it before, right? पर हम यहाँ पे उसको इसलिए डाले हैं क्योंकि all these students are first year, first semester students who have been able to do it. Now बहुत normally ये question मेरे पास आता है कि but ma'am, I am not sure, I'm a first semester student, I don't know anything, should I write a research paper, should I be writing, should I be participating in moot courts, should I be participating in trial advocacy? That is why we've put it here, to let you know अगर ये कर सकते तो आप भी कर सकते हो. And I'm not saying कि आप अकेले कर सकते हो, आप definitely अकेले नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम लोग हैं. Honestly, I started writing research papers or starting getting a hold of it. I started in the first year, but second year से publish होना शुरू हुआ. क्यों? Lack of guidance, lack of mentoring के वजह से. इसीलिए हमने The Legal Chronicle शुरू ही किया इस वजह से है, right? तो अगर आप एक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इवन सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में हो and you feel under confident that I don't know if I have the knowledge to write or to do mooting, that is absolutely untrue. Let me just break it down to you. तुम जिस बबल में रह रहे हो उस बबल से बाहर निकलो. सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड इयर्स के सब कुछ करते हैं और जीतने की भी क्षमता रखते हैं, राइट? नाउ दिस इज ज्यादा हिंदी हो गया क्या? या so basically I want to put that to you so that you feel a little more confident, to feel a little more empowered. You know what, if these people can do it, I can do it as well. And इस पूरे सेशन में हम आपको बताने वाले हैं मूट मास्टर, बेसिकली मूट मास्टर्स में ये हमारा एक मूटिंग क्लब है, ठीक है, जहां पे मोस्टली वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेशर स्टूडेंट्स हु वांट टू विन कॉम्पिटिशंस इन द फ्यूचर. देखो एक पूरा सर्कल है, ठीक है. सर्कल के एंड पे आपको एक जॉब चाहिए. या तो आप जज बनना चाहते हो, या यू वांट टू वर्क इन अ लॉ फर्म, यू वांट टू बी अ लिटिगेटिंग लॉयर, or you want to do UPSC, whatever it is, right? So we'll start from the end goal. That is what you want to become, right? For that, what is the first thing you require? The first thing you require is a very strong CV. जब आपका CV अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें अच्छी मिलने लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगता है, राइट? तो अब सेकंड क्वेश्चन होगा, बट मेरे CV में तो कुछ है ही नहीं. फर्स्ट ईयर में इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन कि आपकी CV में अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है. Everyone starts from a blank slate and that's completely all right. ठीक है. Now we'll move on to CV building. लॉ फर्म को क्या क्या चीजें चाहिए आपको जॉब देने के लिए? एक लिटिगेटिंग लॉयर क्या क्या चीजें देखता है आपको लेने से पहले के लिए? ठीक है. Other than marks is a very small part of your CV which does not hold 100% relevance. ठीक है. अच्छा मार्क्स लाना ये दिखाता है कि आप एक एक्टिव स्टूडेंट हो जिसको लॉ की समझ है, थ्योरी की समझ है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लॉ में क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम डायरेक्टली, अब आप बोलोगे बट आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 20 वीक्स कंपलसरी क्यों किया है लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि आपको 20 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप्स करना ही है डिग्री के लिए? क्यों? उसका एक ही इंटेंशन है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. एवरीवन कैन रीड अ बेयर एक्ट. हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम दैट? हाउ डू यू बिकम अ लॉयर? वो लॉयर क्वालिटी क्या होता है? वो लॉयर क्वालिटी होता है उस लॉ को एक्चुअल रियल लाइफ में अप्लाई करना, और वहां से आता है मूटिंग. इसीलिए मूटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. बोलते ना, आई थिंक देयर इज टू मच इंपॉर्टेंस गिवन टू मूटिंग. व्हाई? मूटिंग में आप बेसिक से सब कुछ सीखते हो. आई टेल यू हाउ. मेरे को भी नहीं लगता था ऑनेस्टली, मैं फर्स्ट ईयर में नहीं स्टार्ट की थी मूटिंग करना. फॉर्चुनेटली आई स्टार्टेड डूइंग ट्रायल एडवोकेसी व्हिच इज द बेसिकली अ क्रिमिनल लॉ पर्सपेक्टिव ऑफ मूटिंग. ठीक है, तो वो मैं फर्स्ट ईयर से करना शुरू कर दी थी. आशीष ऑन द अदर हैंड स्टार्टेड मूटिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ, राइट? तो मूटिंग में क्या होता है ना, यू स्टार्ट विथ रिसर्च. तो आप बेसिक सीखते हो रिसर्च कैसे करते हैं. अब पहला क्वेश्चन है आपको, रिसर्च करते कैसे है, राइट? क्या कीवर्ड्स डालना है, क्या टाइटल डालना है गूगल में, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा वेबसाइट पे रिलाई करना चाहिए एज अ लॉयर, कौन सा वेबसाइट पे नहीं रिलाई करना चाहिए, रिसर्च का पार्ट,
ठीक है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ लॉयर एंड अ जज, राइट, ड्राफ्टिंग. जज को ड्राफ्ट करना पड़ता है क्या, जजमेंट्स. लॉयर को क्या ड्राफ्ट करना पड़ता है, सारा पेटिशन. हाउ डज अ कोर्ट फंक्शन, पहले फाइल जाता है, फिर फाइलिंग सेक्शन से जाता है रजिस्ट्रार के पास कोर्ट का, वो बोलता है अच्छा प्राइमा फेसी केस लग रहा है, हाँ देयर इज अ केस, then it moves on to the judge and then you go and argue, right? So drafting is something सबको आना चाहिए. और last but not the least, speaking. भाई बोलते हैं ना, लॉयर का प्रोफेशन ही है जिसमें आपको बोलना आना चाहिए. इनफैक्ट इवन माय डैड सेज दैट योर वॉइस इज एवरीथिंग, राइट? सो यू नीड टू हैव hot water, you need to take care of your throat, you, because voice is everything for a lawyer. तो फिर बोलते कैसे हैं? अब बहुत लोग बोलते हैं मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करती हूँ. दैट वाज स्कूल लेवल. अब आप आ गए हो कॉलेज में. कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है. कोई भी टीचर नहीं है. देयर इज नो टीचर, नो कॉलेज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर. हाउ यू मेक योर सीवी, हाउ तुम जाके 10 चीज बोल सकते हो, बट मेरे को अच्छा जॉब नहीं मिला क्योंकि मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था. 10 चीज, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ जॉब, यू नीड टू अर्न मनी एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तो मोटिंग क्या करता है ना, आपको हर तरीके से इट मेक्स यू ग्रो. दैट इज वाई वी गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. लाइक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर, जो बोलते हैं आई एम फीलिंग वेरी लॉस्ट, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, यू आर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स. ठीक है. और फिर लगता है कि आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, मैम आई वांट टू बी लाइक यू, ये सब भी आता है मेरे पास. बट आई थिंक मेन चीज ये है ना कि आप कोई ऐसा एक्टिविटी पकड़ो जो आपको ओवरऑल डेवलप करता है. एंड दैट इज व्हाट आशीष हैज कम टू, द 3 important things in mooting. Let's start with the first important thing, right, Ashish? मेमोरियल. जैसे मैंने बोला, ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो अपना वट एवर योर केस इज हैज टू बी रिटन डाउन फर्स्ट एंड देन यू आर्ग्यू इट इन कोर्ट. सिमिलरली इन मूटिंग पहले सारा कुछ लिखा जाता है, उसको एक रिटन, सॉरी, वो एक रिटन ड्राफ्ट है ऑफ योर फाइल, ऑफ योर केस, जिसमें आप पूरा का पूरा केस बनाते हो. आप बोलते हो कि से फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट लॉ पे केस, ठीक है, कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली. Okay, so how will you go about it? You'll first like, acha, so there has to be one party who is me, who's filing the case. I'm filing a case against who? Maybe the Delhi government, maybe the pollution board of Delhi government, someone like that. फिर आप केस बनाओगे, अच्छा इस केस में ऐसा बोला गया था, उस केस में ऐसा बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, उसके बेसिस पे आप एक पूरा केस बनाते हो, और वो होता है आपका मेमोरियल. ठीक है. जब आप मेमोरियल दे देते हो एक मूट कोर्ट कंपटीशन में, उसके बाद आता है नेक्स्ट ओरल आर्ग्यूमेंट्स, राइट? देन यू गो बिफोर अ जज. तो सामने 2 जजेस बैठते हैं आपके सामने. वो कभी कभी मूटिंग में वो कभी कभी सीनियर लॉयर्स और रियल जजेस भी होते हैं. वी हैव पर्सनली सैट बिफोर हाई कोर्ट जजेस देमसेल्व्स. ठीक है. तो उनके सामने फिर आप जाके आर्ग्यू करते हो पूरे केस को. ठीक है. तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना बस आप बोल नहीं रहे हो जो आपके मेमोरियल में लिखा है. इनफैक्ट मूटिंग में बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चंस आपको पुट किया जा रहा है बाय द जज, वो आपको आंसर करना आना चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मे डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग, but they never practice for how you will answer the questions, or they never make a list of questions ki acha these are the probable 10 questions which should be asked by the judge and I am preparing for it from now on. That is what we do in the moot masters club. तो बोलते हैं ना कि कोई भी प्रैक्टिकल चीज को आप थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इफ आई टेल यू कि ओके टुडे आई एम गिविंग यू अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन मूटिंग, दैट इज इम्पॉसिबल. यू शुड नॉट बी वेस्टिंग मनी ऑन दैट. You should be wasting money on what I'll tell you. In fact, that is not wasting money, that is a big investment on yourself. Is a place, a platform where you're able to practically practice with the moot masters. So that is why where the moot masters club comes in. That is why we have a lot of first years. पहले रिसर्च सिखाते हैं हम उनको, फिर हम बोलते हैं आप मेमोरियल ड्राफ्ट करके हमें भेजो, फिर हम मेमोरियल पे उनको मार्क करते हैं, और फिर आता है हमारा ओरल आर्ग्यूमेंट्स, राइट, जिसमें आशीष, मी and all the peers in that particular batch, we don't take more than 12 students in a batch. That is also to ensure that one on one understanding hai. I am able to know, acha Ashish mein ye 5 things ki kami hai, I have to look at that,
राइट. सो हमारा क्लब ऐसे बना हुआ है कि प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको आंसर मिल रहा है. प्रैक्टिकली आप गलती कर रहे हो तो उसमें लिटरली ऐसा है कि there's a person if you say sir your lordship आप फंबल कर रहे हो, राइट. तो वी टेल यू कि you know what, you fumbled 10 times while you're doing the speech. So that is what you need. I'm not saying come to the Moot Masters. I'm saying find a place where 10-15 mooters together are practicing, are giving their best, are having seniors who've done national moot courts come and train you. तो उससे क्या होता है ना, आप फुल ऑन ट्रेन होते हो, आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप टीम में काम कर रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉट तो this was a very funny thing which me and Ashish also felt. जब हम फाइनल ईयर में आ गए थे तो प्लेसमेंट्स का टाइम आया था, राइट. तो a lot of students wanted to go for the corporate work, राइट. तो पहला चीज होता है कि ऑब्वियसली सारे टॉपर्स सिलेक्ट तो होंगे ही, है ना आशीष. तो वी वर लाइक हाँ एटलीस्ट ये 5 पीपल आर तो गोइंग टू गेट शॉर्टलिस्टेड. तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता है, सारा सीवी जाता है लॉ फर्म को, उसमें से वो लोग शॉर्टलिस्ट करके भेजते हैं कुछ 30 पीपल जो जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, और उन 30 में से कुछ 4-5 सिलेक्ट होते हैं एक्चुअल जॉब के लिए. ठीक है. आप बिलीव नहीं करोगे, आपके सिर्फ टॉपर होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे जितने टॉपर्स थे जो को करिकुलर में इंटरेस्टेड नहीं थे या उनके सीवी में को करिकुलर नहीं था, वो लोग शॉर्टलिस्ट तक नहीं हुए. एक होता है कि हो सकता है बंदे का इंटरव्यू खराब हो गया हो, तो देन वी लाइक हाँ मे बी ही वाज हैविंग अ बैड डे, मे बी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया होगा, दैट इज वेरी प्रोबेबल. बट द फैक्ट दैट उनका जो हमारे टॉपर्स थे बैच के, उनका शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ सीवी इंटरव्यू तक के लिए, दैट शोज कि लॉ फर्म्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरी चीजों पे, right? So if there are any questions right now, like Ashish said, please ask. It's so important for you to understand कि लॉ स्कूल में एक एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, एक को करिकुलर होता है. जो को करिकुलर होता है ना, उसमें मूटिंग है. क्यों को और एक्स्ट्रा में क्या अंतर है? को करिकुलर इज एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स. सो मूटिंग में आप लॉ सीख रहे हो, राइट. आप ट्रायल एडवोकेसी करते हो, देन ऑल्सो यू आर वर्किंग ऑन लॉज, right? When you're doing ADR, client counseling, mediation, you're working on laws. Other than that, extra curricular में आता है मन, फिर आता है से what else आशीष, डिबेट आता है एक्स्ट्रा करिकुलर में. Then any sports, dancing, cultural events, all these are extra curricular. तो लॉ में ना को करिकुलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इनफैक्ट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, दिस इज माय पर्सपेक्टिव सोली, दैट इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन यू गेटिंग मार्क्स. बिकॉज जब भी प्लेसमेंट हुआ, तो आपको अंडरस्टैंड करना है ना कि मार्केट में जो जॉब्स मिल रहे हैं वो चाहते क्या हैं, उसके जो HR हैं, जो लोग आपको हायर कर रहे हैं, व्हाट डू दे वांट, उनका इंटेंशन क्या है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो हम जब समझे तो हमें रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, थैंक गॉड वी डिड ऑल दिस, थैंक गॉड वी डिड अ लॉट ऑफ co-curricular. Now if I want a job at any point of time, I can get one because I have that CV. And other than the CV I have, it's not just about the CV ना, skill होना चाहिए. आप जब जाते हो, क्वेश्चन पूछता है आपसे इंटरव्यूअर, तो आपसे वो ये नहीं पूछता कि कॉन्ट्रैक्ट्स के 5 एसेंशियल्स क्या है. नो, दे आर गोइंग टू आस्क यू what is the most, they will basically give you a circumstance, a situation. जितने भी बड़े जगह मैंने इंटर्नशिप किया है ना, जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहां मैंने इंटर्नशिप किया है, उनके इंटरव्यू में ना कभी भी they used to give me a situation and then they would say how would you tackle this. They don't want to see whether you know the law or not. A very few people will want to know कि आपको लॉ पता है कि नहीं. क्योंकि रियल कोर्ट में जब कोई लॉ का डाउट होता है ना, तो जज भी बैरेक्ट मांग के देखते हैं लॉ क्या है. लॉ हमेशा सबको एक्सेसिबल है क्योंकि वो बैरेक्ट में बुक में सबके पास है. क्या एक्सेसिबल नहीं है, वो एप्लीकेशन है. वहां से लॉयर का डिस्टिंक्शन होता है, सॉरी, राइट. तो उससे पता चलता है कि लॉयर किस कैटेगरी का है, वेदर दैट लॉयर हैज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ और नॉट. जब आप फैक्ट्स में लॉ डाल के समझा पा रहे हो, जब आपको एक सिचुएशन मिल रहा है, आर यू थिंकिंग लाइक अ लॉयर और नॉट. एंड वो जो थिंकिंग है ना, वो जो शिफ्ट होता है, वो बेसिकली आप जब एकेडमिक्स पढ़ते हो, जैसे आप उस एकेडमिक्स को अप्लाई करने लगते हो ना, आपका शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग, शिफ्ट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ लॉयर.
क्योंकि आप सही में लॉयर जैसा सोचते हो, आप सोचते हो अच्छा ये जो जब मूटिंग होता है तो आई मीन जो भी विनर्स टॉपर्स होते हैं ना मूट कोर्ट्स की, इफ यू आस्क देम, उनका ये पर्सपेक्टिव होता है कि वो मेरा ही क्लाइंट था, उसका केस मेरे को ही लड़ना है, उसका लाइफ मेरे ऊपर निर्भर है। व्हेन यू टेक इट सो इम्पोर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो आप बन जाते हो एक रियल लॉयर। और कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आल्सो डिड से कि यू वर देयर इन द मिथ्स वाला प्रेजेंटेशन वी डिड। दैट्स व्हाई वी से कि ये एक मिथ है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स के बीच में, कि मूटिंग और रियल कोर्ट या रियल लॉयर के जॉब में बहुत डिफरेंस है। एक अच्छा मूटर जो बहुत अच्छे मूव्स किया है या जिसका उतना दिमाग है, वो ये समझता है कि जिस दिन आप मूटिंग करना जीतने लगे ना, उस दिन आप सही में लॉयर बन जाते हो, क्योंकि आप वैसे सोचना शुरू करते हो। सोचो, इफ at a very young age, even in third year, fourth year, you start thinking like a lawyer, in 2 3 years you will be a lawyer, right? So it's very important for you to understand कि mooters के ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना रियल बनाते हो, right? Thank you, Arnab, for stating this, because I also wanted to put it out to all of you. We have around 27 participants here. कि LinkedIn पे I am very active, and आज ही मैंने ये गोल डाला है, आज ही मैंने LinkedIn पे ये डाला है कि प्लीज ईयरली न्यू ईयर रेजोल्यूशन मत बनाओ। लेट्स नॉट सेट आवरसेल्व्स टू फेलियर। जब आप ईयरली न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो ना, ट्रस्ट मी, नो वन फुलफिल्स इट। What I did put on LinkedIn, I'll share the link with you guys also. We put up a monthly resolution. So मैंने वहां 5 पॉइंटर्स दिए, वो 5 पॉइंटर्स में से आप एक चूज करो और आप उस पे करो। तो you can't be a jack of all trades, you can't do mooting and research and trial at once. नहीं, you are human, you have to be good at 2 things at least by the end of law school. How will you do that? By thinking कि अच्छा January month I devote myself to say moot masters club where I will learn mooting, ठीक है? तो दैट शोज कि अच्छा ये बंदे में डेडिकेशन है, ये जो करेगा अच्छे से करेगा, तो एक्चुअली में आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सो द बेस्ट वे टू मैनेज टाइम बिटवीन लॉ स्कूल एंड असाइनमेंट्स एंड other co-curricular activities is to set yourself up ki this month I'm going to work on this particular skill, and these are the 4 things I need to do to get that particular skill, right? तो ऐसे अपने आप को सेटअप किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, Ashish, you can take up. Okay. So like you saw, there are three things. Okay. First is memorial. Second is overall rounds. And third is teamwork. Okay. So we'll start with memorials. First point in a memorial is cover page, parties, and prayer. Okay. So like I said, give me a second. I'll just share the sample memorial so that everyone can be explained properly. Just a second. Agarwal, you are. Yeah, so I wanted to just say कि ये जो मेमोरियल हम दिखा रहे हैं, this is a winning memorial. This will showcase you कि कैसे बनाया जाता है, right? So please be very very attentive while he is sharing. Look at the document, ask questions. I want Visible. I'm just starting the share. yeah, Okay, is it visible to everyone? it's coming, one sec. Okay. So Ayush says that it is visible, so I think we can start. Okay, so this is a memorial. Okay, this is just a sample memorial. Okay, this is what basically we use in our Moot Masters Club, or when someone asks for any help, we give this to them. Okay, this is like a sample. You will find all basic things here like cover page, index of authorities, everything. Okay. So let's start with the first thing that we saw was cover page, parties, and prayer. 3 pages, how they are linked together. Okay, why we have written 3 pages altogether in the first point?
This is your cover page. Okay, you can say few things are there in your cover page. This is your name of the court. These are mandatory requirements. You have to mention the name of the court. उसके बाद you have to mention the nature of the petition and number of the petition. ठीक है, नेचर ऑफ द पिटिशन का मतलब ये होता है वेदर इट इज अ रेड पिटिशन और इट इज अ स्पेशली पिटिशन, ये सारा कुछ. ठीक है. या सो बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिटिशंस. ठीक है, तो क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिटिशंस, यू हैव टू मेंशन ये कौन सा पिटिशन है, लाइक वेदर इट इज अ रिट पिटिशन, वेदर इट इज अ स्पेशली पिटिशन और एन ओरिजिनल पिटिशन, रिव्यू पिटिशन, देयर आर मेनी पिटिशंस. ठीक है, this is your petition number. So these two help you identify your case. तो एक नॉर्मल कोर्ट में, एक नॉर्मल केस में, लेट्स से टुडे इज 3 जनवरी. ठीक है, 1 जनवरी को जो भी फर्स्ट केस फाइल किया गया होगा कोर्ट में, दैट विल बिकम योर रिट पिटिशन सिविल नंबर 1 ऑफ 2021. ओके, so every case is numbered. That is the unique number of that case. It helps the court to identify that case. For example, today if I go and ask for a case number 45 of 2018 or 2010, okay, they will be able to identify it. But if I go and ask a judgment of 2010 by the name, they may not be able to find it because there can be many judgments with similar names. Okay. Therefore, the every case in a Supreme Court, High Court, कोई भी कोर्ट हो, every case is numbered properly. ठीक है, अब ये हो गया एक रियल कोर्ट में जो फॉलो होता है. यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर इन योर मूड कोर्ट एज वेल. आप जितना ज्यादा रियल रखोगे अपने मेमोरियल और अपने मूड कोर्ट प्रोसीजर्स को, उतना ही इजियर होगा जीतना. ठीक है, इस पार्ट को ब्लैंक दिया जाता है. नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि लाइक क्या ऐड करोगे, नंबर बताया जाता है या नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, नंबर बताया नहीं जाता है. दीज आर ओनली फॉर्मेट्स. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके लेटर में जब इन अर्लियर स्टेजेस लाइक क्लास 3, 4, 5 में जब आप लेटर ड्राफ्ट करते थे तो आपको एक टेम्पलेट दिया जाता था. ओके, डेट के स्पेस में यू आर गिवन डेट mm/yy, दैट वाज जस्ट अ टेम्पलेट. वैसे ही आपको ये टेम्पलेट बनाना है. ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी के लिए, टू शो दैट you know that this is the repetition number and this is where it should be written. ठीक है, ये पार्ट जो है ये ब्लैंक ही रह जाता है. ओके. Okay, I have not received a lot of questions till now. Okay, so I'm actually getting worried if you are understanding or not. If you have any question, please put it in the chat box or you can raise hand. Okay, not a problem. Fine, let's start. So next is your name of the parties. This part, this entire part is called a cause title. Okay, what do you mean by cause title? Cause title means the name of the parties plus their title. This is the name of the party. Joseph and another is the name of the party. Petitioner is his title. Okay, so Joseph and another का title है petitioner. On the other hand, Vincent Hospital का title है respondent. All of these together, Joseph and another petitioner versus Vincent Hospital respondent, together is called the cause title. Okay, so basically your name of the case is your cause title. Okay, any doubt so far? Guys, please ask questions if you don't understand. That was where I was going next. So let's come to let's come to the name and title differentiations. Okay, name obviously will be given to you in the mood proposition. Okay, respondent's name is also given in the mood proposition. Some respondents can be deduced on your own. Okay, for example, if someone says that a law is being challenged, okay, its constitutionality is being challenged in the Supreme Court, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया बन जाएगी एक रेस्पोंडेंट. इफ इट इज सेंट्रल, इफ इट इज नॉट अ सेंट्रल और स्टेट लॉ है तो फिर वो एक स्पेसिफिक स्टेट बन जाएगा रेस्पोंडेंट. ठीक है, बट टाइटल में देर आर मेनी ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ, appellant, accused, sorry, plaintiff, appellant, petitioner, and prosecution. Okay, for all the aggrieved parties, you have to use it. You have to basically use it according to your case. Okay, so let's say your case is a civil case coming directly to the Supreme Court or coming directly to the High Court.
try. See now. Annotate, you have to go to the meeting settings and then switch it on. Okay. Yes, Arnab, you can unmute yourself. Sir, I think that the plaintiff is a person who is an aggrieved person, at the actual person who is facing some problem, and petitioner is, suppose I am a lawyer, so I am his petitioner. I take his case forward to the court. It Okay. may be a Okay. yes, sir. So here, Joseph and another, the title used is petitioner. So are you saying Joseph and another are lawyers of the plaintiff? Think. No, I think actually he went into mute. Okay. So there's an answer. When someone files a plaint, they're called plaintiff. When someone files an appeal, they're an appellant. Someone files a petition, they're a petitioner. Mishika, can you please raise hand so that I can unmute unmute you? Acha, yeah, I found you. Yes, you can unmute yourself. The person who files the case is a petitioner and respondent is the defendant. Okay. No, what's the difference between petitioner and plaintiff? Petitioner is the person on who has filed the case, and the burden of proof is on the petitioner, and defendant is whom the case is against. Okay, fine. Anyone else? Okay, Pratiksha says petitioner is the one who filed a case. Yes, obviously. But plaintiff is also the one who has filed the case. So how do you distinguish between An the two? appellant is also the one who files the case. So what is the difference between the two? Can I try? Yeah, sure. Yeah. So plaintiff generally plaintiff argues the case in civil cases generally, Okay. and petition is filed under like section Article 32 and Article 226 or 227 of Indian Constitution. So the petition is one which is filed before the High Court or Mhm. High Court or Supreme Court when fundamental right is violated or something like that. ठीक है. So, और कोई anyone else wants to try? Okay, I'll just read out Mantasha's answer. When someone files a plaint, they are called plaintiff. Okay. When someone files an appeal, they are appellant. When someone files a petitioner, they are petitioner. Yes, that was little convenient. Okay, fine. So basically, what do you mean? Okay, so there are meaning for these terms. I think what Karthik said was the closest to correct answer. Okay. Basically, we use the term plaintiff only in a civil dispute. Okay. We call it suit, SUIT, suit. Okay. That is why your show series suit only has civil matters. Okay. So basically, in a civil suit, we have a plaintiff. When, let's say, okay, my rights have been violated by Aakriti and I file a civil case on her, I will be the plaintiff. Okay. On the other hand, if this is the same situation in a criminal case, I will be the prosecution. Okay, if my right is violated by Akriti and I file a criminal case, it will be a prosecution. I will be prosecution. Okay. On the other hand, appellant, I think everyone knows, when you are appealing from a judgment of a lower court to a high court, it becomes appellant. Okay. So if I am not satisfied with the judgment of a lower court, I will go to the high court or the Supreme Court. So I'll be the appellant. Okay. Petitioners are used for very specific cases, very rare cases which are special in nature. For example, writ petition is a petition. Okay, it is specifically provided under Article 32. It is a separate form of litigation. Okay, similarly you have your special leave petition, which is also different. Curative petitions, review petitions. We use the word petitioner only when a petition is filed. Which case will amount to petition is given in your judgments or given in your statutes itself. Okay, whereas plaintiff and prosecution is general. Okay, if you are filing a civil case, it will be plaintiff versus defendant. This is not written anywhere, you have to know it. Okay, the person who is aggrieved files the plaint and he is known as plaintiff. Okay, now let's come to the opposite side, respondent versus defendant. Okay, so you have respondent or defendant, or in criminal cases accused. Okay, defendant once again is used only in civil cases.
Okay. Accused once again is used only in criminal cases, and respondent is used in all other cases. If it is an appellant, the opposite party will be respondent. If it is a petitioner, still the opposite party will be respondent. Okay. So defendant for civil cases, plaintiff for civil cases. Okay. So plaintiff versus defendant. Then prosecution versus accused for criminal cases, and petitioner versus respondent for other normal special cases. Okay, which are specifically mentioned in different statutes and constitution. Okay, so you have to decide the title according to the nature of your petition, whether it is a writ petition, whether it is original petition, whether it is an appeal. Okay, accordingly you will decide the title. Fine. Any question so far? Anyone did not understand this part? किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया? You want me to repeat in ओके, Hindi? इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग इट। अभी एक बार में नहीं समझ में आना भी चाहिए, अगर नहीं आता है तो इट्स फाइन, यू कैन आस्क। Fine. ठीक बहुत सिंपल है, प्लेंटिफ, पेटिशनर, एपेलेंट, रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, अक्यूज्ड, ऐसे समझो। ठीक है. I think so. Let's move on. Yeah. Next is this part. तो अब ये एक ऑप्शनल पार्ट है. ठीक है. बेसिकली इसका मेन पर्पस है व्हेन यू आर फाइलिंग अ केस टू द कोर्ट. Obviously, you are going against the opposite party. If I file a case against Akriti, it is Ashish versus Akriti. Okay, I am filing a case against her. I am responding to her. She is responding to me. Okay, but from a legal point of view, you both of you, like both the parties, are responding to the judges. Okay, therefore we write this: upon submission to the Honorable Chief Justice and his companion justices of the Supreme Court of India. This is basically like a verification that this written submission is for the judges and not for the opposite party. Okay, all my submissions, all my prayer will be for the judges and not for the opposite party. Okay. देखो गाइस, ये समझना ना बहुत जरूरी है कि लॉयर की काम ये नहीं होती कि आप केस जीतो। लॉयर का ये ड्यूटी, और एडवोकेट्स एक्ट में ये लिखा है, लॉयर्स ड्यूटी इज टू प्रेजेंट द केस bought by a layman, a person who is not a lawyer or someone who does not know law per se, ठीक है, जिनके पास डिग्री नहीं है, to present that case in the best possible manner before a judge in a court of law. तो जब भी आपको ये लगे ना कि नो, आई हैव टू विन द केस, नो, no lawyer also works like that. You have to just present the case in the best possible manner with the best interest in mind of the client and put it before the court for the court to make a decision. ठीक है? Yeah. Okay. So now you saw what is cover page. You saw the parties. What is the link between cover page parties with prayer? ठीक है, तो ये लिंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट. एक मेमोरियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज होता है प्रेयर. बाकी पूरा मेमोरियल कोई खोल के देखेगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं. ठीक है, जब भी आप किसी अच्छे कंपटीशन में जाते हो, द फर्स्ट पेज दैट द जजेस लुक इज योर प्रेयर. प्रेयर में क्या लिखा है. ठीक है, when you are writing hold the petition maintainable or hold the petition not maintainable, hold that fundamental right is violated, this is not a prayer. ठीक है, this is not a proper prayer. प्रेयर में you should ask in detail what do you want from the court. इससे पता चलता है आपको कितना नॉलेज है लॉ का, आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकली थिंग्स कैसे वर्क करते हैं. ओके, दैट इज व्हाई प्रेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ the link between prayer and cover page and parties is that what prayer you are asking for determines who will be the parties in your case. ठीक है, now I'll give you a small example, everyone will understand. Let's say I want in this, leave this case in general. ठीक है, let's say I want a law. ठीक है, एक लॉ चाहिए मुझे जो कि मुझे स्टेट ऑफ कर्नाटका से चाहिए. ओके, but I have not filed a case on state of Karnataka. I filed a case on Union of India and I'm asking कि स्टेट ऑफ कर्नाटका को बोलो लॉ बनाकर देने. Obviously, if state of Karnataka is not a party, not there to respond, the court will not be able to order the state. ठीक है, तो आपको क्या प्रेयर चाहिए वो डिसाइड करता है कि पार्टीज कौन होंगे. ओके, देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी hold that so this is the respondents ka memorial. Okay, I opened the respondent side memorial.
hold that the petitioner's son is not brain dead and refuse the permission to withdrawal of life support. ठीक है, तो फ्रॉम द पिटिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको चाहिए, सो दिस है यूथनेशिया का केस, ठीक है, नॉर्मल यूथनेशिया का केस लाइक अरुणा शानबाग केस, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हॉस्पिटल यूथनाइज करे आपके चाइल्ड को या आपके किड को, यू हैव टू मेक द हॉस्पिटल एज अ रेस्पोंडेंट। इफ यू आर क्लेमिंग कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यू ऑल्सो हैव टू मेक द स्टेट एज अ रेस्पोंडेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की इशू है। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन। फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट विल बी योर प्रेयर्स। आपका जो भी प्रेयर होगा उसके अकॉर्डिंगली यू डिसाइड पार्टीज कौन होंगे। दिस इज द लिंक बिटवीन कवर पेज, पार्टीज एंड प्रेयर। ओके, yeah, I'll take Mantasha's question. Till then, anyone has any question, please ask now. Okay, so what will be written when the appeal is filed in a high court instead of the Supreme Court upon submission to so it will still be upon submission to the Honorable Chief Justice and the companion justices of the High Court of the state of Delhi or High Court of the state of Maharashtra. Okay, in High Court and Supreme Court we do not call judges, we call justices. Okay, therefore we use the terms Chief Justice and companion justices, but the term will change. Okay, the name of the court will change. Instead of the Supreme Court of India, it will become the Honorable High Court of the state of Delhi. Okay, yeah, anyone else, any question? No one? Fine, so that is the first point in memorial: cover page, parties and prayer. How to prepare a timeline for moot? Okay, fine, so let's discuss that also. Basically, see, so if you want to prepare a timeline for moot, you are talking about timeline of the moot proposition, right, Pratiksha? Okay. So first of all, you have to determine the dates of incidents. Okay, whatever incident has happened on which date. Give me 1 second. I'll just start sharing. Okay. So, so this is your whiteboard. Okay. You draft columns like this. Okay. This column will be your date ka column. Okay. You will write date here. Then will be what incident took place. Okay, and don't draw these things. Obviously use a ruled paper or use your soft copy, take it like a Word document and something like this. Okay, so all you have to do is draft it like this, make different tables. What you have to do is you start from here, you write the date here. Let's say an incident took place on 1st January 2020. Okay, another incident took place on 3rd January, but not 2020, 2019. Okay, so what you do is you basically write this, the second one before the first one and the first one after that, so it will automatically come in a serial order. Okay, so basically what happens is this is how you prepare your timeline. You read the moot proposition, you write the events, do not find which events have come before the other one, just read whatever events you find, just write it down. Later, if you find that there are more incidents that happened before this incident, write it above. Okay, before that, like I did. Okay, let's say you found 3rd January का incident after 1st January. ठीक है, आपने मूड प्रोपोजिशन पढ़ा, पहले आपको पता चला 1st January 2020 में ऐसा हुआ, फिर मूड प्रोपोजिशन गोज टू फ्लैशबैक, ऐसा होता है। ओके, मूड प्रोपोजिशन गोज टू फ्लैशबैक और फिर पता चलता है 3rd January को ऐसा हुआ। ठीक है, अगर सॉफ्ट कॉपी है तो डू वन थिंग, यहाँ पे आप इसे नीचे कर दो और इससे ऊपर कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, so timeline should be in a chronological order in which the events have taken place. Okay, so timeline has to be in a chronological order in which the events have taken place. Always write the timeline on the basis of events, what event has taken place, and prepare it. इससे फायदा क्या होता है, next time when you have to read the mood proposition, you don't have to read the entire mood proposition, you can refer to your timeline or list of dates and know how it is prepared. Okay, know how, what is there in your mood proposition. Okay, now let's come to the next point, that is index of authorities. This is the next page and probably the most important page in the memorial, index of authorities. Okay, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज से पता चलता है कि आपका रिसर्च कैसा है. दिस इज योर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज. यू कैन सी यहाँ पे सारे कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, केसेस के नाम है. ठीक है, इससे पता चलता है आपका रिसर्च कैसा है, whether your research is strong or your research is weak.
जितने ज्यादा केसेस के नाम मैच करेंगे फ्रॉम द एक्चुअल मेमो, तो बेसिकली हाउ इट हैपेंस इज दैट एक मेमोरियल आप सबमिट करते हो, एक बेस्ट मेमोरियल द ऑर्गेनाइजिंग टीम दे ड्राफ्ट देमसेल्फ, ठीक है, उनके मेमोरियल में जितने भी केसेस होंगे दे आर कंपेयर्ड विथ योर मेमोरियल, जितने भी केसेस सिमिलर होंगे दैट मेमोरियल बिकम्स द बेस्ट मेमोरियल। ओके, so this shows कि आपका रिसर्च कितना ज्यादा स्ट्रांग है, how many cases you have added, how many relevant books or statutes, okay, how many relevant statutes have you used, ठीक है। Index of authorities is divided into two parts. First, can anyone tell me what are the two types of sources of research? There are two types of sources of research. Can anyone tell me दो sources of research क्या होता है? Anyone? Okay. Primary and secondary. Anyone else who would Okay. like to try? So Dipanshi is saying it's primary and secondary sources. Okay, and yes, Dipanshi, you are right. Basically, there are two types of sources of research. One is primary source and the other one is secondary source. Okay. Precedents, yes, Arnab. So basically, what you are saying, precedents come within primary sources. Okay. There is like a hierarchy. तो highest में होता है primary source और secondary source. Primary source के अंदर एक एक करके list down होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच कम फ्रॉम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब प्राइमरी सोर्स जो बनाया गया होता है इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर सोर्स। फॉर एग्जांपल आपका स्टैट्यूट, स्टैट्यूट कैसे बनता है, देयर आर सम थिंक टैंक्स, ठीक है, मतलब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, ठीक है, लेट्स से ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, सोसाइटी में ऐसा नीड फील हो रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट समथिंग लाइक दैट का जरूरत है। क्यों? क्योंकि मे बी ह्यूमन ऑर्गन्स की बहुत ज्यादा रैकेट्स हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी एक लॉ नहीं है और बहुत जरूरत है उस लॉ का। ये इशू दिया जाता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, वो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। दे प्रिपेयर अ ड्राफ्ट बिल, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन दैट इज गिवन टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट चेक्स इट एंड देन इंट्रोड्यूसेस इट इन द पार्लियामेंट और फिर वो लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इसमें रिसर्च करते वक्त दे मे रेफर टू मेनी अदर लेजिस्लेशंस, दे मे रेफर टू मेनी अदर कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, बट कोई भी एक स्पेसिफिक चीज नहीं होता जिसपे रिलाई किया गया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, यूके के स्टैट्यूट्स, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग हैज बीन रेफर्ड, लेकिन क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे साइटेशन दिखता है that chapter 4 is taken from this part or chapter 5 of constitution is taken from US like that? nahi na, that is because it has only been referred and then we made our own constitution, okay, ऐसा नहीं कि वहां पे था इसलिए ऐसा लिया है, नहीं, we interpreted it, we saw the benefits and disadvantages and then we made our own constitution, ठीक है। तो these are primary sources of research जिसमें you don't rely on any other sources। प्राइमरी सोर्सेज में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, योर जजमेंट्स and sometimes reports, not books, sometimes reports, okay, if there are any survey reports, okay, they come, or treaties and conventions, okay, so national or domestic laws mein your constitution, your statutes and your judgments, and international law mein your international conventions and treaties, all these are primary sources of research, okay। Primary sources of research have much more value than secondary sources and therefore they are written first in index of authorities, ठीक है। पहले you can see comes the constitution, then statutes, then the cases। Next is secondary sources of research। secondary sources of research मतलब books और articles और dictionaries। basically secondary sources वो होते हैं जो इंटरप्रेट करते हैं प्राइमरी सोर्स को और कुछ नहीं, ओके, दे आर ओनली एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्राइमरी सोर्स। फॉर एग्जांपल योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्राइमरी सोर्स, योर डीडी बसो commentary on the constitution of India is a secondary source। why? Because DD Basu has only given his commentary on the constitution, what has been given in which article, which case law is relevant for which article, bas itna, okay, therefore it is secondary sources, it has less value in the eyes of law, therefore we rely more on judgments, more on statutes and very less on books and articles, okay। Any question from index of authorities, anything that you did not understand or something that you have heard and you want to clarify?
Anyone? If you have any question, you can raise your hand. I'll ask you to unmute, or you can drop in the chat box. Till then, we will proceed. Okay, fine. So issues and jurisdiction. The next point is issues and jurisdiction. What do you mean by issues and what do you mean by jurisdiction? One second, let's come to the memorial. So this is your jurisdiction. Okay, statement of jurisdiction. Jurisdiction means the power of the court to hear a specific matter. Okay, so basically every court does not have all the powers. For example, civil court has power to hear only civil matter. Criminal court has power to hear only criminal matters. Writ petition can be heard only through Supreme Court and High Courts. Okay, so basically, not all courts have all the powers. Therefore, you have to prepare this statement of jurisdiction and explain from where does the court get its power to hear this case. जैसे कि ये रिट पिटिशन है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने का बस एक ही प्रोविजन है और वो है आर्टिकल 32. तो अगर आप रिट पिटिशन फाइल कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा द पिटिशनर हैज अप्रोच्ड अंडर आर्टिकल 32. ठीक है. एनीवन नोज अगर आपको हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करना है तो क्या करना होगा? द प्रोविजन. एनीवन? ओके, सोना से आर्टिकल 226. ओके, तो लिखा. Fine. So since everyone is saying, so Article 226 of the Constitution allows you to file a writ petition before a High Court. ठीक है. तो अगर आपको हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करना है तो यू गो अंडर आर्टिकल 226. ओह, तन्वी आल्सो नोस. ओके, सो तन्वी इज इन क्लास 9, राइट तन्वी? We have proactive students here. Okay. Oh God, I thought you were joking. No, she is in class 9 and she is still interested in law. She wants to pursue law and she is asking whether she can participate in moot courts. But yeah, unfortunately, in India, only law students participate in moot courts. Okay. Outside, we also What have. you can do is you can reach out to me and we'll share the recording of the 2-day webinar we took for first years, where we gave you a basic idea of what law school is and what competitions are. So I think that will be very helpful for you to understand how law school works and what are the competitions which are only for law school. Okay. Yeah. So let's proceed. So this is jurisdiction. Okay. Jurisdiction is basically the power of the court to hear a specific matter. You have to mention in your memorial where does the court get its power from. Here it is article 32. Normally it can be article 226 और बाकी सब depends on the statutes. ठीक है. different laws हैं, different provisions हैं जो power देते हैं. One example, let's say you have to file a normal case. ठीक है. तुम कल मेरे साथ कुछ हुआ, civil matter. ठीक है. Suppose injunction के लिए I am building my house, opposite party comes and stops me from building my house. उसने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया मेरे घर के ठीक सामने, सो दैट आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू. ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइल अ नॉर्मल केस अगेंस्ट हिम इंजंक्शन के लिए. ठीक है. दिस इज अ सिविल मैटर. यू फाइल इट अंडर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड. ठीक है. तो आप सिविल प्रोसीजर कोड में उसे फाइल करते हो. यू रीड सेक्शन 5, यू रीड सेक्शन 6, उसके अंदर ये जाता है. ठीक है. तो अलग अलग स्टैट्यूट गिव्स यू पावर टू फाइल केसेस. दैट डिपेंड्स ऑन द मोड प्रोपोजिशन. आपका मोड प्रोपोजिशन में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आप उसे पढ़ते हो, रिसर्च करते हो और फाइंड आउट कि कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा. अगर रिट पिटिशन है देन यू नो कि आर्टिकल 32 या 226 दो ही है. बट अगर मोड प्रोपोजिशन डिफिकल्ट है, जहाँ पे रिट पिटिशन नहीं कोई और पिटिशन है और उसके काफी प्रोविजन हो सकते हैं, तब फिर आपको रिसर्च करना पड़ता है. ओके. Akriti, are you sharing the screen? Yeah, so I just wanted to say, like, this is another tip, like you can see, which we worked on for procedural laws to win moot courts. तो ये टिप 41 है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो what are the rules you should be looking at as a mooter and what is, you know, the basics. So basics you can always go and figure out what they are on our page at the Legal Chronicle, where we basically share, you know, very basic tips, especially for first 2 years, or about things of law school, and you know, little concepts
like quizzing, UPSC judiciary, whatever you're interested in, oral rounds in moot courts, corporate lawyer, judiciary preparation कब से करना है, कैसे करना है, टिप्स क्या है, जजमेंट कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज मूटिंग से ही रिलेटेड है, राइट? तो आप ये आके हम द लीगल क्रॉनिकल इज द पेजेस नेम, यू कैन look for us on Instagram and always reach out to us there also. Our team is very very active on it. Yeah, yeah, Ashish, continue. Okay. So now this is issues. We are done with jurisdiction. Next is issues. What do you mean by issues? Issues are the question that have been raised in a case. In every case, there will always be questions, and your aim is to answer those questions. Okay. These questions are also framed by you. Okay. So for example, you can see यहाँ पे, let's look at the second question. Second question is whether the petitioners can be allowed to withdraw the life support. तो अगर केस है that a person wants to withdraw the life support, तो automatically question बन जाएगा whether he or she can be allowed to withdraw the life support. ठीक है, तो whatever the moot proposition says, one question can be deduced from there. ठीक है, तो अगर आपका moot proposition बोलता है कि this law is violating article 14 because it discriminates between Hindus and Muslims, एक क्वेश्चन बन जाएगा whether the law is actually violative of article 14 on the grounds of discrimination. Okay, so this is how you draft your issues. Issues are basically questions presented before the court that you have to answer through your arguments. Okay, this is only summary, this is your arguments. Okay, so you can see this is your issue and here you are arguing it. Okay, so these are the questions that you answer through your arguments. Okay, any doubt so far? Anyone, guys, anyone has any doubt, do ask. Okay, see, I did not say this till now. So basically, moot court is not possible to understand in one webinar or two webinars. Okay, it is a very long concept. It requires months to understand and then years to keep practicing and like brush your skills. Okay, so it will take time. But if you do not understand anything, please ask. Okay, now let's come to the next point, that is research. Okay, just a second. Yeah, here I don't have to share anything. Basically, what do you mean by research? Can anyone tell me how do you define research? Like whatever you understand with research, basic understanding of research. What do you do when I ask you to research? What will you do? Come on, guys, give some answers. Yeah, anyone can go ahead. Collect information in detail of the case. Yes, fine. Come on, Tanvi is able to answer, then all of you should be able to answer. Yes, Anna, you can go ahead. As Tanvi said, first collect all the information and then organize the information according to my priority, what I need, filtering out from that information, and then yeah, basically that. Fine, fine. Anaga has very nicely Try explained. to find same case history in other milestone cases and also read other Bear Act or statute. Fine, Yeah. okay. Pratiksha has said, first of all, try to find the mother case. So that's called a landmark case. Yeah. Mantasha is look up facts and information about the topic and subtopics to prepare your argument. Yeah. Anyone else who would like to try? Okay, you can keep putting your answers. Okay, I'll just start. See, the answer is in the word itself. Okay, research. Basically, in research, you try to search something that is already there. Okay, the difference you will understand when I say discovery and research. Okay, in discovery, you find something which is completely new that was never before, okay, discovered before. In research, we find something that is already there. It is there, hidden somewhere or not completely interpreted. Okay, that is what research is. In research, you take up a question, you try to read about it. You read statutes, you read conventions, you read Bear Acts, you read judgments, many things. Okay, you usually start from articles and books because they are easy to understand. Okay,
After researching, means after reading all these books, you basically try to compile them. Okay, like Arnab said, after you have read all the books, all the articles and judgments, you compile them and see which information is relevant for you and which information is irrelevant for you. You take up all the relevant information and see whether those are sufficient to answer the question that you had raised in the beginning. Okay, after that, the most important thing, that is discussion. You discuss it with your team, you explain your research to the other members of your team. They will ask questions. If you are able to answer all the questions that your team asks, that means your research is foolproof and you will be able to answer the question. If you are not able to answer the questions of your teammates, it means that your research is not foolproof. You have to research more on that topic. Okay, researching basically means reading more and more and compiling them. Okay, so every day you read, you discard the irrelevant things, you keep the relevant things, then you read the relevant things again and try to relate it with the question, whether it is able to answer the question or not. Finally, when you complete it, it should be able to answer the question, then your research is complete. Okay, now in research there are a lot of things. For example, you have to read articles. For that you will require something like Google Scholar. Okay, that is called a database. Database is like a collection. Database in your hard copy is your file. Okay, in your file you have all your documents. In database you have all the list of journals, judgments, books, everything. Okay, so everything put together is called a database. It can be a judgment database, it can be an article database. For example, Google Scholar is a free database of articles. Okay, so if you go on Google Scholar and try to search a judgment and try to search an article, you will get the article. Okay. So whenever you want an article, you can use Google Scholar. Similarly, judgment databases are SSC Online, Manupatra. Okay. If you want to access a judgment passed by High Court, Supreme Court, or any other court, you go to Manupatra or SSC Online. These are paid databases. Free databases, you can go to Indian Kanun, or the best database for free judgments are Supreme Court and High Court websites. Okay. LexisNexis is very difficult to get access to. LexisNexis is like a database of books. ठीक है, you will see in your law school maximum books जो आप पढ़ते हो सबके नीचे में LexisNexis लिखा रहता है, क्योंकि it is LexisNexis का publication. Okay, तो LexisNexis is one of the biggest publications. इसके वजह से maximum books उनकी होती है. अगर आपको LexisNexis का, तो LexisNexis is also not free. अगर आपको मिलता है उसका सब्सक्रिप्शन फ्रॉम योर कॉलेज, तो फिर आपके पास काफी सारे बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है, एंड देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस व्हिच गिव LexisNexis. ठीक है, एसएससी ऑनलाइन, मनुपात्रा में से कोई एक यूजुअली मिल जाता है. जे स्टोर कभी, जे स्टोर इज एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ गूगल स्कॉलर बट अ पेड वर्जन. ठीक है, The best way, the best place to go for cases is Judas, that is Supreme Court and High Court websites, क्योंकि बेसिकली वो फ्री है, हर एक लॉयर उनको यूज करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के. आप आराम से वहां से जाके यू कैन फाइंड आउट ऑल द केसेस यू रिक्वायर. नेम यूज करो, साइटेशन यूज करो, डेट्स यूज करो टू फाइंड आउट, टू सर्च द केसेस. इट्स वेरी इजी एंड वेरी एक्सेसिबल, फ्री ऑफ okay. कॉस्ट. So what you do is you go to Indian Kanun, see the date of the judgment, and then use Supreme Court ka website to find the judgment. Okay, that's all. Because Supreme Court website is reliable and obviously it can be used. All other websites are not allowed. Okay. Yeah. Now we are done with memorial. So if you have any question related to memorial, please ask now. Guys, we are putting out a disclaimer right now, and again I'm saying कि जो भी हम समझा रहे हैं, we are telling you a surface level understanding of this. Moot Masters Club runs for 3 months per batch, right? क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में, और हर एक चीज का डिटेल्स है. रिसर्च भी कैसे करते हैं, जुरिस्डिक्शन भी कैसे करते हैं, उसके अंदर सब पॉइंट्स बहुत है, 7-10 पॉइंट्स है जिससे आप बना सकते हो एक मेमोरियल. So we are giving you a basic understanding of how things are going to be, and then you can take it forward or on your own, or you can find a mentor who could help you or do all this. Yeah. Okay, anyone has any question related to memorials? You can put your question in the chat box. If you have any urgent immediate question, raise hand. I will let you unmute yourself. Okay.
Okay, till then let's move ahead with oral arguments. Okay, yeah, first point. Now, in an oral argument, you have to understand that your script is ready, right? So your memorial is ready. Now, never start from the memorial and just read out whatever is there in the memorial. Never do that, right? So by script, I don't mean ki each and every line, each and every word should be written. No, I mean कि please स्ट्रक्चर बना लो. जैसे आपको पता है कि the first issue is going to be jurisdiction, the second issue will be for example अगर transfer of property का कुछ है, right? तो आप उसमें कुछ हो सकता है, provisions of transfer of property act होगा, contract होगा, कुछ cases होंगे, like इसमें चलो हाँ ये first two issues है. पहला issue है writ petition और दूसरा issue है whether the petitioner can be allowed to withdraw the life support, right? John and let him die, तो let him die मतलब article 21 आ जाता है, right? Because right to life is extended to right to die also, that is in question in the case. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, जिस स्ट्रक्चर में आप let's move on to the argument. I'll just give them an example from the argument A B C D जहाँ पे लिखा है. Because if I tell you, you won't be able to understand. When I show you how it's done, it's easier to understand, right? तो पहला है maintainable, like jurisdiction. तो आप पहला pointer लिखोगे maintainability या jurisdiction. फिर आपको वहां दिख रहा है कि पहला point is article 32. तो you all you have to write is article 32. आपको पता होना चाहिए. You should know what is there in article 32. You have to tell them कि हाँ it's extraordinary jurisdiction. This is a particular case. Now you can see the third paragraph. ठीक है? उसमें लिखा है A. The respondent is not a state under article 21. तो basically वो आपका पहला सब issue है. Second सब issue क्या है? No fundamental right of the petitioners have been infringed in this case. ठीक है? तो आपका pointer क्या होगा? The first pointer will be jurisdiction. उसके अंदर सब point में आएगा पहला article 12 और दूसरा that fundamental right is not infringed, right? So you have to divide the script in such a manner that जब आप argue कर रहे होते हो ना, when you are in the flow, you can't read the whole script and then go back to it. That is why you should know the script. And other than that, if you have pointers, तो तुमको याद रहेगा, अच्छा issue 1 में 2 point है, 2 point के अंदर 4 points है, तो मेरे को पहले issue 1 से शुरू करना है. Issue 1.1 is article 12. तो article 12 में 2 important cases है which I am supposed to cover. So that is how you're supposed to make a script for the oral arguments, right? This is very 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 important guys, क्योंकि बहुत सारे लोग सब कुछ अच्छा करते हैं, मेमोरियल अच्छा है, स्पीकिंग स्किल्स अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छे से नहीं बनाया. ठीक है, उससे क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी नॉर्मल टू बी नर्वस. नर्वसनेस आता है when you're speaking in front of people you don't know who are more knowledgeable than you are, राइट? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी स्क्रिप्ट बना रहे हो ना, वो 1 2 3 4 पॉइंटर्स में बहुत क्लियरली हो. तो व्हेन यू लुक डाउन इन द पेपर यू डोंट हैव टू लुक लाइन वाइज. ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट द पॉइंट्स एंड बी लाइक हाँ 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, राइट? सो नाउ आशीष इज टेलिंग यू लाइक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपका स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए. आप एक टेबल में दिखा सकते हो, राइट? तो इश्यू 1 में है मेंटेनेबल है या नहीं, द फर्स्ट केस, राइट? So उसके अंदर what is that? उसमें आप you have to deal with constitution articles, you have to deal with statutes and you have to deal with cases. And आपके मेमोरियल में कौन सा पेज नंबर में ये पार्ट दिया है. So whenever you argue like this, okay? Good morning, your lordship. This is council 1. The council 1 will be dealing with issues 1 and 2 right now. The issue 1 comprises of the maintainability of the case, where the council will be dealing with article 12, which is issue number 1, or you can say like this also. Issue number 1 is maintainability of the case. This issue is going to be argued in twofold. First, whether article 12 has been met with or not, whether the other party is a state or not, and the second pointer is whether fundamental right has been infringed or not. Your lordships, this particular argument is present in the memorial in page numbers 14 and 15. You may refer to that. And then, if your lordships do not have any preliminary question, the council would like to move on with the first issue. Then the lordship will say, no, tell me more about the facts. Then you tell them of the facts. Okay? Then they'll say, okay, move ahead with the case. Then you start with your arguments.
So that is why these pointers are very essential, क्योंकि आप जब flow में होते हो, you can't read lines and paragraphs. You can only look at pointers and remember कि अच्छा उसमें क्या हुआ था. That is why you should know your memorial very properly by heart. You should know each and everything written in the memorial, but never read out from the memorial. Okay, moving on to the next point. Organize the arguments according to issues and sub issues. Now I've already dealt with that. Obviously maintainability है तो उसके अंदर ही आप बताओगे ना आर्टिकल 12 और फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ कि नहीं. यू कांट डील विद इश्यूज ऊपर नीचे करके. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रीजन मेंटेनेबिलिटी इज द फर्स्ट इशू. मेंटेनेबिलिटी का बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, जैसे आशीष ने एक्सप्लेन किया, कि वो ये कोर्ट को बताता है कि आपके पास अथॉरिटी है इस केस को लेने का, और हमारे पास पावर और अथॉरिटी है आपके सामने ये केस को आर्ग्यू करने का. इसीलिए जुरिस्डिक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द फर्स्ट इशू. तो रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जब आप मेंटेनेबिलिटी आर्ग्यू करते हो, डायरेक्टली नहीं करते हो, इनडायरेक्टली करते हो, बट करते हो जब, तो कोर्ट बोलता है ओके, नाउ आई थिंक दिस केस इज समथिंग आई कैन टेक अप, एंड देन दे मूव ऑन विद आर्ग्यूमेंट्स. However, in a moot court, क्योंकि for the sake of competition आप आर्ग्यू कर रहे हो, तो आप एक बार में सारा आर्ग्यू करते हो. ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इश्यूज में पहला जुरिस्डिक्शन होगा, फिर दूसरा आपका लीगल इश्यूज होगा. तो ठीक है, ये ऐसे होता है. ठीक है, तो दिस इज लाइक अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्क्रिप्ट. ठीक है, आप यहाँ पे इश्यूज बताते हो, फिर यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखते हो इश्यूज क्या होता है. Then you divide it into sub issues. पहला सब इशू हो गया फंडामेंटल राइट वायलेशन, सेकंड सब इशू हो गया लोकस स्टैंड है, थर्ड सब इशू हो गया ऑल्टरनेटिव रेमेडीज, ऐसे. ठीक है, थर्ड कॉलम में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, स्टैट्यूट्स या जजमेंट्स हैं फॉर दैट स्पेसिफिक सब इशू, वो आप यहाँ पे लिख कर रखते हो. ठीक है, उनके शॉर्ट पॉइंट्स. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से लोकस स्टैंड है. ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे केस का नाम यूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लोकस स्टैंड है, रूल रिलैक्स्ड, हो गया. ओके, लास्ट वाला है पेज नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे आप अपना मेमोरियल का या मूड प्रोपोजिशन का पेज नंबर लिखते हो, सो दैट इफ द जज आस्क्स यू कि कहाँ पर है, तो यू कैन टेल हिम और हर. ठीक है, तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ ब्रीफ. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पूरा मेमोरियल आपका 30 पेजेस का होता है. ओके, आप 30 पेजेस स्क्रॉल करते रह जाओगे. अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, यू विल बी कीपिंग लाइक यू विल कीप ऑन सर्चिंग लाइक कौन सा पेज है, कौन सा पेज है. इसलिए एक सिंगल पेज या 2 पेज का ब्रीफ बनाया जाता है. और हर एक स्पीकर का टाइम लिमिट होता है. आप 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते. 5-7 मिनट में आपको अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करना है. तो आप जो 1 महीने से काम कर रहे हो, जिसको आप 30 पेजेस में लिखे हो, उसको फिर आपको 7-8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है. तो बहुत ब्रीफ डाउन करना पड़ता है. ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट विल बी आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट, और बाकी चीजें क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी आंसर कर दी जाती है. ठीक है, yeah, go ahead. Yeah. So, like I was saying, there was someone in the Tulika. Tulika stated कि हाँ English is important. It is very important, but you don't have to have fancy English. नहीं, क्या होता है देखो, English पता होना obviously important है, but basic English भी आने से चलता है. आपको बस क्या करना है, आपको अपना वही यहाँ next pointer इसी से डील करता है. Use persuasion or rhetoric and not fluency or speed. We have seen in our law school बहुत बड़े बड़े डिबेटर्स जो मतलब बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, वो अच्छे मूटर्स नहीं बन सकते, क्योंकि वो ना इतना स्पीड में बात करते हैं, जबकि एक कोर्ट में इतना स्लोली बोला जाता है, क्योंकि कोर्ट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. व्हाट आई से शुड रीच द जज. ऐसे होना चाहिए कि उसको समझ में आ जाए. फर्क नहीं पड़ता आप उसमें कितना फैंसी इंग्लिश यूज करो, क्या यूज करो, नहीं. All you have to do is, your lordships, the council will be dealing with issue 1. उसे क्या है, slowly जा रहे हो, क्योंकि usually एक judge जो होता है, he is a 60-70 or 50-60 year old. ठीक है, firstly. Secondly, अगर आप जो बोल रहे हो उनको नहीं समझ में आएगा, तो फिर आप ऐसे केस हार जाओगे. There's no point in arguing. Thirdly, it is very very important for you to understand कि वो जो पूछ रहे हैं आपसे, उसको भी आप अच्छे से आंसर करो और धीरे धीरे आंसर करो. बस वही मैटर करता है. और आप जितने अच्छे से अपना केस जानोगे ना, आपका स्पीकिंग ऑटोमेटिकली उतना अच्छा होगा. आशीष वाज समवन हु जॉइंड, मतलब हमारा जो मूट टीम था, हु जॉइंड द मूट टीम एज अ
as a researcher. He said, I have public speaking fear, stage fright, I can't speak in English. Okay, I can't be very fluent and be very fancy. And honestly, the first time there was a situation where a researcher was not available and he had to become the speaker forcefully, क्योंकि सारा preparation हो चुका था. If he wouldn't have taken at the speaker part, then he मतलब हम नहीं जा पाते competition के लिए. And he won the best speaker in that, right? सो यू सी हाउ मच पीपल चेंज. तो क्या होता है ना, प्रैक्टिस करते रहते हो, आपको केस इतना अच्छे से पता होता है कि आपको इंग्लिश ठीक से नहीं भी आए ना, तो भी आप बहुत अच्छे से वहां पे जाके धीरे धीरे छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस में सारा कुछ बोलना होता है. ऐसे बहुत फ्लुएंटली नहीं बोलना पड़ता है, फ्लो में जल्दी जल्दी नहीं बोलना होता है, धीरे धीरे समझा समझा के बोलना होता है. मेक श्योर करना होता है कि सामने वाला वो समझ रहा है आप क्या बोल रहे हो. क्योंकि देखो, एज ह्यूमंस हमारा जो थिंकिंग स्पैन होता है ना, जो फोकस स्पैन होता है, वो बहुत कम होता है. लाइक ऑन सोशल मीडिया बोला जाता है कि 8 सेकेंड्स के अंदर द पर्सन डिसाइड्स वेदर दे वांट टू रीड योर पोस्ट और नॉट, राइट? तो इतना छोटा होता है अटेंशन स्पैन. तो यू हैव टू मेक श्योर that you're talking to the judge and you're saying, suppose Ashish is the judge, okay? So your lordships, if you may please refer to the memorial. नाम के लिए रेफर नहीं करा रहे, मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर वो जोन आउट हो चुका है तो वापस आ जाए. इसमें इंग्लिश का बात नहीं है, साइकोलॉजी है. आप समझ रहे हो सामने वाले इंसान को, उसको इंसान समझ के उसको उस तरह से ट्रीट कर रहे हो रिस्पेक्ट के साथ, बट आपको फिर भी समझना है कि सामने वाला जो बैठा है वो समझ रहा है कि नहीं आपकी बातें. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीटिंग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज्ड टू आल्सो बी वेरी स्पीड में. आई यूज्ड टू आर्ग्यू इन द फर्स्ट इयर्स ऑफ माय मीटिंग एक्सपीरियंस. देन धीरे धीरे करके भी रियलाइज कि अगर सामने वाला समझे ही नहीं तो आप जितना भी अच्छा इंग्लिश बोलो, इट्स गोइंग टू बी ऑफ नो यूज, राइट? सो these three points are very important. Have a brief. I'll add one thing to something that Arnab had asked. Okay. Now, these rules change from competition, from rounds to rounds. Okay. Not entirely few things. Okay. If you have sufficient knowledge and if you are persuasive enough, fluency will not matter. First of all, you have to understand the difference between fluency and speed. ठीक है. फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक लगातार बस बक 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 बोलते जा रहे हो बिना रुके हुए और कोई लाइक स्टैमरिंग नहीं है वैसे. दैट इज नॉट फ्लुएंसी. ओके. even if you are speaking slow but you are not stammering, even if you are speaking slow you are not stuttering, you are not thinking what you are speaking, like आप deliberate कर करके बोल रहे हो, that is fluency. Okay. स्पीड इज समथिंग वेयर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु हैज हिज मदर टंग, जैसे अब मैं हिंदी में अगर बोलूंगा तो आई कैन स्पीक फॉर 1 घंटा तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. तो दैट इज डिफरेंट. जिसका मदर टंग होता है दे कैन स्पीक इन स्पीड, क्योंकि वो अगर गलत भी बोलते हैं तो दे कैन रेक्टिफाई. ठीक है. बट यू आर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर स्पीकिंग, सोच सोच के आपको बोलना पड़ता है. ठीक है. तो वहां पे एक बहुत जरूरी चीज है रुक जाना. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग यस योर तो व्हाट better होता है yes your honor. The answer to this question I believe should be found in paragraph 32 of the memorial where it is written. Okay, so ऐसे आप slowly बोलो, that is fluency. Okay, that is not speed. Fluency or speed is also different. Fluency is when you can speak properly without stammering. Okay, speed is even when you are stammering but you are non-stop speaking. Okay. Yeah, exactly. Should we use fillers like, you should not use fillers like so these things do not use. Okay, you should not use in a normal flow. If the council can take 10 seconds to answer this question and then go back to your memorial, see, even the judges appreciate it, because then you're not wasting the time of the court by thinking for 1 minute and answering the wrong answering in a wrong pattern. They prefer it when the council takes 10 seconds and gives the right answer, because the court's time is very valuable. उस तरह से सोचा जाता है ना. In moot courts also the judges will come and say, counsel, you're taking so much time of the court, we can't give you so much time, right? So there also you have to be like, you have to understand कि court's time is so important, तो आपको उस तरह से ही उसको handle भी करना होता है. बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो मूटिंग कर करके यू विल लर्न, यू विल अंडरस्टैंड. एंड मतलब हमारे मूट क्लब में भी वी टेल यू हाउ टू यूज दोस फिलर्स, हाउ टू नॉट फंबल, व्हाट टू से. लाइक व्हेन अ पर्सन फंबल्स देन वी टेल देम कि अच्छा इसके बदले कुड हैव टोल्ड दिस, तो वो प्रैक्टिस करता है बार बार. तो बहुत सारे तरीके होते हैं. अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है या
फिर आप फ्लुएंट नहीं हो, ठीक है, Okay, तो ये so सारी चीजें। yeah, so what Arnab asked is very important. So he was asking कि like जब law firms के people they become the judge, तो they expect a little fluency. वो expect करते that you speak a little speed, ठीक है, in a speedy manner. That's where I was going to answer. तो एक competition में there are 3 to 4 rounds, ठीक है. First round which is called preliminary round, you have to cross that. These are like knockout rounds, ठीक है. इसके बाद you go to quarter finals, then semi finals, then finals and then the winner. Like a normal any competition, sports competition, ठीक है. प्रिलिमिनरी राउंड जो कि जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं लाइक 40 50 60 टीम्स, और जिसमें वहां पे मोस्टली लॉयर्स आते हैं, हाँ, यूजुअली दूसरे वालों में जजेस, रियल जज आते हैं, इसमें मोस्टली लॉयर्स आएंगे प्रीलिम में। तो फर्स्ट राउंड में जो है यंग जजेस आते हैं, लाइक लॉ फर्म के एसोसिएट्स आ सकते हैं, आपके कॉलेज के एल्यूमनाइज आ सकते हैं, हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ये जैसे लोग। हम लोग जाते हैं अपने हाँ जूनियर्स के लिए, एग्जैक्टली। राइट, तो जो लोग तो बहुत मूटिंग किए हैं वो लोग जाते हैं, तो वो लोग आपको डराते हैं देखने के लिए कि आप हैंडल कर पा रहे हो वो प्रेशर की नहीं, राइट। वो लोग ये मोस्ट, मतलब समझो 90 में से 10% ही होगा जो तुम्हारा इंग्लिश देखेगा। पर ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिलिमिनरी राउंड होता है वो 2 राउंड्स में होता है, एक प्रिलिम नहीं होता है, 2 प्रिलिम होता है। आप दोनों साइड से आर्ग्यू करते हो और दोनों साइड का अग्रीगेट प्लस मेमोरियल निकाला जाता है आपके नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। सो यू ऑलवेज हैव द द अगर एक सपोज जज को तुम नहीं पसंद आए क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश गलत है, उस बेंच में 2-3 जज भी होते हैं, तो एक को नहीं पसंद आएगा पर बाकी 2 को आएगा, दूसरे राउंड के 3 को आएगा, तो हमेशा बैलेंस हो जाता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना, एक रियल जज जब आता है, आप में कुछ कमियां हमेशा रहेंगी, तो वो सारी चीजें मेकअप हो जाती हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। I think we are done with main topics. Okay, now please नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस। question. Yeah. If we can have some raise of hands, we'll unmute you guys. Other than that, like हमारा policy ही ये है कि remember the day you stop asking questions is the day you stop learning. And we genuinely believe in this. We do not think कोई भी question छोटा बड़ा stupid silly ऐसा कुछ नहीं होता. All questions are questions and are meant to have and get answers. And you should also believe that in your law career. Daily life, yes, exactly. In your daily life also, especially if you are getting into law, you have to ask why for everything. Why to do moot, why to make memorial, why to participate in competitions, everything. Okay. Why this webinar, every small thing. Start learning this. And like obviously it was written there, if you stop asking, you will stop learning. Okay. So keep asking whatever doubts come in your mind. So Himani has asked about the Moot Masters Club. Let's do a little bit of discussion of what it is, right? So like you can see, it's a 3-month course. ठीक है, इसमें you get personal mentorship for each team. So as a team, you get one mentor throughout the 3 months. Who तो आप अगर mooting मतलब moot masters में आए हो तो आप कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे. There will be a vast difference between you 3 months before, 3 months after. हम एक्चुअली एक डिफरेंस बता सकते हैं और हमने एक्चुअली वीडियोस बनाए अपने प्रीवियस बैचेस के जिसमें वी हैव सीन फॉर आवरसेल्व्स कि व्हाट इज द डिफरेंस वी हैव सीन अमंग स्टूडेंट्स, राइट. तो उसके बाद आते हैं तो व्हाट वी स्टार्ट विद, वी गिव यू स्टडी मटेरियल, वी गिव यू रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि यू माइट हैव क्लासेस एंड you will not be able to come for all live sessions. But unlike other courses, we do not believe कि recording से एक student समझ सकता है. We like to have the personal approach. ठीक है, we are like private mooting coaches, right? तो क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे बैचेस लेते हैं, वी ट्राई कि आपको सब कुछ समझ में आए. ठीक है, तो वी स्टार्ट विद, तो हमारा सेशन प्लान 13 वीक में डिवाइडेड रहता है. स्टार्ट होता है कि आपको बताते हैं व्हाट इज मूटिंग, हाउ टू गो अबाउट इट, मूटिंग प्रॉब्लम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे आशीष ने आज डिस्कस किया, राइट, कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है. तो उसमें फिर हम आपको बताते हैं कि जुरिस्डिक्शन में कौन से 7 पॉइंटर्स है जो आपके मेमोरियल में होने ही चाहिए अगर आपको कोई भी मूट जीतना है. तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट विनिंग द मूट rather than just learning for the sake of it. क्योंकि जब आपका एक हेल्दी कंपटीशन आता है ना, तो पीपल डू बेटर व्हेन दे सी अदर्स डू आल्सो. और क्योंकि this Moot Masters Club runs in a team of 3, so it's not 1 but 3 members have to be in one team. And real moot courts में भी ऐसा ही होता है, 3 मेंबर चाहिए होता है.
तो उससे क्या होता है, मूटिंग, क्योंकि मूट मास्टर्स में ऑल ओवर द कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, ऑल एनएलयूज, नॉन एनएलयूज, वी हैव हैड अराउंड मोर देन 100-200 स्टूडेंट्स जिसको हमने ऑलरेडी ट्रेन कर चुका है, राइट. एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेटवर्क करो. अभी वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है सीनियर्स से मिलना एंड ऑल दैट. तो ऐसा हुआ है कि यू नो देव कम इंडिविजुअली, मेड, वी पुट यू इन टीम्स. इफ यू डोंट कम विद योर रियल मूड टीम, वी पुट you in teams. ठीक है. They become really good friends at the end of 3 months, and then you know later on they have a very good interesting relationship with each other. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूटिंग करियर में, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ये भी समझो कि अगर आपको किसी रियल, मतलब किसी रियल जॉब में अगर सरवाइव करना है, तो 2-3 चीजें एक लॉयर देखता है आप में, आपको लेने से पहले. आपके कितना कनेक्शंस है. आप ये समझो कि जितने लोगों को आप इंडिया में जानोगे लॉ स्टूडेंट्स को, वो कभी ना कभी आपके सारे बैचमेट्स आपके साथ करेंगे, मतलब छोड़ेंगे कॉलेज, राइट. सो यू एंड कॉलेज टुगेदर. someone is in Tamil Nadu High Court, say someone is in Calcutta High Court, someone is in Delhi High Court, and someone is in Supreme Court. If I am in Supreme Court, my 4 friends are in different High Court. सबके केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में आएंगे, राइट. तो वो जो नेटवर्किंग पार्ट होता है वो लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने पूरे लाइफ के लिए, नॉट ओनली अबाउट लॉ स्कूल बट लेटर ऑन एज अ लॉयर यू नीड दैट. How to choose the correct moot court competition? Okay, that's very important. Actually वो डिपेंड करता है आप क्या सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, पहला, क्योंकि मूटिंग अलग अलग चीजों पे होती है. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे कॉमन है, तो आपको ये डिसाइड करना होता है विच सब्जेक्ट, देन यू मूव ऑन टू व्हाट इज योर स्टैंडर्ड. लाइक हमेशा टॉप लेवल, नेशनल लेवल मूट कोर्ट के लिए कभी मत जाओ. दैट्स व्हाई व्हाट वी डू इज आफ्टर, लाइक ड्यूरिंग द कोर्स, जब हमें पता चल जाता है अच्छा ये टीम अच्छा काम कर रहा है, तो हम उनको बता देते हैं कि यू नो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस कॉम्पिटिशन. ये थोड़ा छोटा कॉम्पिटिशन है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. अगर ये जीतोगे तो फिर अंदर से एक होता है एम्पावरिंग लगता है कि हाँ आई वन इट. तो फिर और हिम्मत मिलता है बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े जजेस के सामने आर्ग्यू करने का. तो वी डू दैट फॉर आवर मूट मास्टर्स मेंबर्स. वी फर्स्ट टीच देम एंड देन वी टेल देम कि ये कॉम्पिटिशन तुम्हारे लिए अच्छा है, गो फॉर इट. एंड देन वी हेल्प देम इन द कॉम्पिटिशन इज वेल. ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही, हमारे स्टूडेंट्स है, बिकॉज वी डेवलप अ पर्सनल रिलेशनशिप विद देम. So we do that for them without even asking. So we do that for free, obviously, but that is what we have the relation with the students, right? There is one question from Tanvi. Okay, like it has come as a direct message. She's asking what theory subject should we do for moot court competitions. Okay, so Tanvi, I think by this time you would have known different moot court competitions are held on different law subjects. Okay, so you cannot read all the subjects from before. As soon as you decide that you want to participate in this competition, then you start studying. Okay, so let's say today I decide like there is a competition called KK Luthra Criminal Law Moot Court Competition. Okay, it is going to be held in January itself, few like around 10 days later. Okay, you decide 2 months back that you want to participate in KK Luthra's competition. You know that it is on criminal law, you know that it is on bail. Now you start reading what is bail, how do you apply criminal laws, everything. Okay, so you cannot read all the laws from before. You read only after you are done with it. Okay, only after you have decided that I am going to for this competition for sure, then you start preparing that law. Okay, because there are very rare laws that you might have not heard also, like arbitration moot court competitions or competition law moot court competition. Okay, so you will never be prepared for all the laws from before. Yeah, for sure. तो अर्चित ने पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि रिसर्च ऑथेंटिक है या नहीं. वैसे ही आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स तभी इंपॉर्टेंट हो जाता है. गवर्नमेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेना, केसेस से लेना इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, प्रोविजन से इंफॉर्मेशन जब आप लेते हो, कोई भी रिपोर्ट अगर आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिपोर्ट हुआ जो एक कमिटी बैठाया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो वो कमिटी का एक अपना रिपोर्ट होगा, उसमें नीचे वो लोग देते हैं साइटेशन में कि कहाँ से लिया गया सारा इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन अगर कोई भी वेबसाइट या अच्छे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, एमिटी ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर सपोज बीबीसी हुआ, अल जजीरा हुआ, ये सारी चीजें रिलायबल प्लेसेस हैं जहां से आप उठा सकते हो इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज सपोज्ड टू बी ऑथेंटिक. On the other hand, Indian Kanun is something which you should never 100% rely on. Wikipedia, never, because these are editable sites. Even you and I can edit it, right? तो लॉ, मतलब एज अ लॉयर यू कैन नेवर एवर 100% रिलाई ऑन. कुछ समझने के लिए ठीक है, आप विकिपीडिया से समरी समझ लो,
बट अगर डेप्थ में कोई चीज भी पढ़ना है या उसको डबल चेक करना, कभी मत भूलना किसी अच्छे ऑथेंटिक reliable sources से, right? So we obviously teach that in the Moot Masters Club as well. Any online platform for moot court competition? So तुलिका बेसिकली सारे जितने लॉ स्कूल्स होते हैं ना, सबका एक नेशनल मूट कोर्ट होता है. सपोज आप क्राइस्ट से हो तो क्राइस्ट का अपना नेशनल मूट कोर्ट होगा जिसमें वो होस्ट होते हैं और वो पूरे इंडिया से सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, इनवाइट भेजते हैं, जो आपको हर जगह मिलेगा. जैसे लॉ इन्फॉर्मेंट्स वगैरह हुआ, कचहरी, ऑब्वियसली कचहरी में सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, मूटिंग का कॉम्पिटिशन कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, सब मिलेगा. बट सीधा कंपटीशन में कभी मत जाना. ऑलवेज लुक एट द प्रोपोजिशन. अब पता चला आप कोई टैक्स मूट कोर्ट के लिए चले जाओ जिसका आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है. ऐसे नीश लॉस पे मत जाओ, बेसिक लॉस पे जाओ. कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ, ये सारी सिंपलर लॉज है, इजी है हेल्प लेना, सबको पता होता है, तो आपको बहुत लोग हेल्प भी कर सकते हैं. ऐसे ही मूट कोर्ट्स के लिए एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक जाना चाहिए. ठीक है. Anyone else? Any question? Yeah. So guys, like I will be sending the brochure of the Moot Masters Club to you, and like I said, ये बहुत ही on demand है, तो we keep it We have very. actually not even opened the registration for the And next we are batch. opening it just for you. हमारा जनवरी बैच 23rd, मतलब यूजुअली फरवरी से शुरू होगा. बेसिकली बेनिफिट्स यही है कि आपको ओरल प्रैक्टिस राउंड्स, रिसर्च स्किल्स, क्या कीवर्ड यूज करना है, ड्राफ्टिंग का पूरा डिटेल, एक एक चीज, क्या प्रोसीजर लॉ यूज करना, और बहुत इंपॉर्टेंटली सारे फर्स्ट ईयर्स को एक जगह पे नेटवर्क करने का बहुत अच्छा जगह है ये, राइट? तो हम ये करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे एक दो कॉलेजेस हुआ, CNLU, NLU, रांची, इसके सारे फर्स्ट ईयर्स हमारे पास है, राइट? तो उससे क्या होता है ना, क्योंकि वो कॉलेज में मिले ही नहीं है, वर्चुअली ही सब, उतना अच्छा फ्रेंडशिप नहीं हुआ, तो सारे लोग यहाँ आ जाते हैं, फिर वो उनको हम टीम्स में डाल देते हैं, तो वो अपने आप फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो आप अपने फ्रेंड्स को ला सकते हो, 3 के टीम में भी आ सकते हो, इंडिविजुअली भी आ सकते हो, राइट? एंड Yeah. So we Tanvi, keep, you are like a special case. Okay, so we will approach you, we will talk to you, we will think. yeah. Like if we think like possible hai, then we will take you. Okay. बिकॉज बहुत टफ है, और एज अ लॉ, एज अ स्कूल स्टूडेंट आपकी पढ़ाई भी है, तो आई डोंट थिंक पॉसिबल Like, होगा, बट वील no फाइंड अ वे problem फॉर if यू. like if you have And we have sufficient. other things coming up in February, so I think you should be waiting for that. वो आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा. अभी हमने रिलीज नहीं किया है क्या है, बस बताया है कुछ बहुत ही एसेंशियल आ रहा है जो लॉ स्टूडेंट्स को बाइंड करेगा टुगेदर. सो लेट्स सी कब उसका खुलासा होता है. तो जैसे मैंने बताया, लाइव सेशंस रहेगा, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन रहेगा. जो सेशंस होंगे वो बेसिक और एडवांस लर्निंग में डिवाइडेड रहेंगे. आप जब आओगे तो आप किस लेवल पे हो, जैसे आप फर्स्ट ईयर हमेशा लेवल 5 से आता है, तो वो एकदम इंट्रोडक्टरी से उनको सिखाया जाता है कैसे क्या किया जाता है. ठीक है. ऑब्वियसली सर्टिफिकेट्स मिलेगा, यू गेट योर ओन मेंबरशिप कार्ड एज वेल. दीज आर बेसिक्स यू विल बी गिवन. सो आई विल शेयर द ब्रोशर विद यू. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, गो फाइंड द लीगल क्रॉनिकल ऑन इंस्टाग्राम. आई हैव ऑलरेडी सेंट द लिंक, आई सेंड इट अगेन. ठीक है. आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज दिस इज अ वेरी फ्री प्लेटफॉर्म. उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं. हम एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 hours एक एक टिप पे लगाते हैं बनाने के लिए. हर एक चीज इसमें कवर्ड है. एज अ फर्स्ट ईयर तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैं यहाँ पे. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिटीज, मूटिंग, व्हाट नॉट टू डू एज अ फ्रेशर, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए एज अ फ्रेशर, इस पे हमने बनाया है टिप्स. ठीक है. कैसे इंटर्नशिप मिलना चाहिए, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू कंफर्म एन इंटर्नशिप, केस ब्रीफ कैसे बनाते हैं, कहाँ इंटर्न करना है फर्स्ट ईयर्स के लिए, जूरिस्प्रूडेंस, एवरीथिंग इज कवर्ड. ठीक है. तो ये इंस्टाग्राम पे हम बहुत मेहनत करते हैं. यू कैन गो एंड check out our page. I'll send the link to you all. Other than that, I am very active on LinkedIn, as you can see. I mean, हमारे पोस्ट्स भी बहुत अच्छा करते हैं, as you can see. मतलब 10,000 तक का हमारा रीच है स्टूडेंट्स का. एंड आई मेंटर स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन पर्सनली. सो इफ यू ever have any doubts, you can always reach out to me on LinkedIn. I'm always available for students. I did not get the mentorship I am providing for, and that is why I do it for free right now, right? So if you ever have any doubts, कोई भी basic चीजें हैं, please reach out to me on LinkedIn and I will be happy to answer your questions.
राइट। और मैं हर दिन टिप्स भी डालती हूँ लॉ स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल लेवल पे, अपनी पर्सनल स्टोरीज बता के, तो यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट एज वेल। आई विल सेंड द लिंक ऑफ दिस एज वेल। एंड इफ यू डोंट हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल, प्लीज मेक वन, बिकॉज आज के जमाने में लिंक्डइन के बिना यू कैन नॉट बी अ लॉ स्टूडेंट। सारे इंटर्नशिप्स, जॉब्स, सब कुछ यहाँ से मिलते हैं। तो ऑल हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल। If you don't have one, please make one. See, especially in this pandemic era, okay, like in virtual world, it is really very difficult to network, know your teachers, seniors. LinkedIn will actually help you. Like Facebook, Instagram is not a professional way to approach your teachers, right? But you can do that on LinkedIn. Lawyers, teachers, आप उनसे network कर सकते हो. That is why LinkedIn is important. Make an account if you are not on LinkedIn, okay? Yeah. जैसे हम वो भी बताते हैं हम क्यों लिंक्डइन इम्पोर्टेंट है अपने इंस्टाग्राम पे भी, उस पे भी हमने एक टिप बनाया है कि हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स ऑन लिंक्डइन, उस पे भी टिप है। तो गो, प्लीज गो चेक आउट आवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड वी सेंड यू द ब्रोशर ऑफ द sorry, yeah, the Moot Masters Club, and you can reach out to us as well. If you're not interested in mooting, you can also look at legal research and writing. Honestly, उसका market price किसी भी legal research and writing का around 4 to 8,000 के बीच में होता है. Because we are student friendly, we are doing it just for students. We've kept it as minimal as 500 as of now. अभी क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड पे हमने बहुत फ्री कर रखा है, न्यू ईयर है, क्रिसमस था, तो वी हैव डन इट फॉर स्टूडेंट्स, बट द एक्चुअल मार्केट प्राइस फॉर दिस इज 4 to 8,000 any other website you go to, so you can always check that out as well. Anything else that LinkedIn to read, put it in the group and leave them. For yourself to build your career, that's very important. I know you've paid for this webinar. That shows that you are actually doing something for yourself. That's very, very important. A lot of law students don't do that. Help चाहिए होता है external mentors से. Always have mentors in your life. मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, find any mentor, but always have mentor for the next 5 years, right? All the best, guys. Thank you so much. Thank you so much to both the speakers and participants for their precious time in this webinar. Thank you so much. Thank you, Sejal. Thank you so much.